morning, my dear students. So today we are going to learn the first chapter of the class 10th maths, that is real number. तो आज सीखेंगे हम लोग real number. So right now what are the contents we have to study in this chapter? So first one is Euclid's division lemma, second one is the fundamental theorem of arithmetic, and third one concept of rational number and their decimal extension, and last one revision of irrational number. Okay, these are the fourth content we have to study in real numbers. So before introducing all the content or all the subtopics, we need to understand what is number and how it came to our world into number system that we have already studied in class 7, 8, 9. So right now once again we will revise how the numbers have come into this world of mathematics. So here I am. So right now you can see natural number is there, whole number is there, then integer is there, rational number, irrational number, real number, and then we are going to learn the properties of. From there we will, up to this one we have to study till now. So natural number, what is natural number? Then how it came? Counting number are called the natural number. So earlier civilization, how they are counting? With the help of the fingers, with the help of the sticks, and with the help of the stones. So right now how they are counting? If the number of the students in a class is 60, then they are keeping the 60 stones, or by the mark. If there are 60 students, then they are doing by this, they are counting by the line marks. Okay, but here counting number, to avoid the time taken, to avoid the mistakes, we have introduced the number system, and that number system started from the natural number, means which we have started counting any numbers is called the natural numbers. So counting number are called the natural numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on. It will go on up to 9, 8, 9. Then what happened next? And you know that India's great mathematician who is the renowned mathematician of the world, that is Aryabhatta. How he introduced the zero earlier, how it came. नेचुरल नंबर तो जान गए हम लोग, 1 से 9 तक होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जाने कि आर्यभट्ट ने हमें इंट्रोड्यूस किया जीरो का. हाउ इट केम. तो क्या हुआ था कि इफ यू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग 9 minus 9, then earlier we are using cross. But to avoid this one, we introduce the number system, that is zero. Then the collection of natural number along with zero. So zero, if you include 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it goes so on. So these are the whole number. Then 10, 11, 12, 13. So natural number, counting number are called the natural number, and counting number along with 0 are called whole number. Also you can write like this, 0, n. Now what is integer and how it came to the number system? So right now again we do the subtraction. If you do the subtraction, 7 minus 9, then you know that 7 minus 9 minus 2. But how it came? Minus 2, how it came? Earlier we know that all the positive, but how it minus? So 7 minus 9. So it is not possible. We are just writing 2. But if we start introducing minus, then it means we got negative of natural number introduced. Similarly क्या आएगा मेरे पास? -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5, इस तरह बढ़ते चला जाएगा, है ना. तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सो कलेक्शन ऑफ, फिर से कलेक्शन आ रहा है, तो क्या? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव माइनस नेगेटिव नंबर, 0, नेचुरल नंबर विल बिकम द इंटीजर. तो इंटीजर किसका कलेक्शन है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर नेचुरल नंबर रहेगा. तो इसमें क्या लिखेंगे? सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन. और ये लिख सकते हैं. कोई इसको इंट्रोड्यूस करना चाहेगा किसी और तरीके से भी, कैसे? कि सर कि माइनस नेगेटिव नेचुरल 0, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर. यू कैन आल्सो से लाइक दिस,
कि द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर आल्सो कॉल्ड द इंटीजर, आर आल्सो कॉल्ड द माइनस, इट कैन बी रिटन दिस way. अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल नंबर किसको बोलेंगे। तो बिफोर स्टडिंग रैशनल नंबर यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या अंतर होता है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर, पार्ट, हिस्सा। जैसे हमारे पास 10 बिस्किट है और इसे हमें 20 स्टूडेंट में बांटना है। सपोज आई हैव 10 बिस्किट, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 20 स्टूडेंट्स, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू, 10 biscuits, number of biscuits by number of students, so everyone will get the half biscuit, everyone will get the half biscuit. So what is here, so fraction is also written is in the form of p by q, and rational number is also written is in the form of p by q, where both position q is not equal to 0. Always remember कि fraction and rational number will be expressed in term of p by q, p by q. So where q is not equal to 0, then what is the difference between both? So here p and q are whole number, p and q are whole number. ये क्या होगा, whole number होगा। p और q क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में whole number होना चाहिए। क्या होना चाहिए, whole number होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो भी होना चाहिए ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। समझ में आ गया? और एक और इसको क्या कर सकते हैं कि p हमेशा लेस देन q होना चाहिए, p लेस देन q। जैसा हमने बताया शुरू में कि p इज अ पार्ट ऑफ, p इज ऑलवेज लेस देन q, तो तभी ये फ्रैक्शन होगा। तो दो शर्त हैं, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ p by q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q is not equal to 0, and where p and q in fraction, where p and q are whole number, whereas integer where p and q are, where in rational number where p and q are integer. ओके, सो ये कंडीशन है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अभी समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बोलते हैं कि a number is said to be rational number if it is expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integer, p and q are integer. Understood? Okay. Now irrational number, अब देखते हैं irrational number किसको बोलते हैं। तो irrational number किसको बोलते हैं, a number is said to be rational number which is neither which is not rational number, which is not rational number, or in other words what we can say कि a rational number which cannot be expressed in term of p by q, जिसको p by q में नहीं हम लोग लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, irrational number। और एक और तरीके से क्लास 10th में एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि a number is said to be irrational number in which it cannot be terminating nor repeating, so that is called the irrational number। और रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is called real number। combination of rational number and irrational number is called real number। now you can see how we can represent, how we can give the symbol। तो यहाँ पे देख लो सभी का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या है, इसको n से, कैपिटल N से, इसको होल नंबर, इसको इंटीजर i, इसको q, बट इसका इरेशनल नंबर में एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसे t से दिया गया हुआ है, और रियल नंबर r से। तो अब यहाँ पे हम लोग एकदम सिंपल सा समझेंगे डायग्राम के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। सो दिस इज द रियल नंबर, दिस इज द रियल नंबर। नाउ इन दिस टू पार्ट्स, one is
rational number, rational number, rational number, and other is irrational number, irrational number, irrational number. तो इसे किससे, Q से और इसे T से. अब इसका एग्जांपल मैंने वहां नहीं दिया था. एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका इरेशनल नंबर क्या बोल सकते हैं कि √3, √5 जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, और ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो जिसे सिंबल से दर्शाते हैं, और सेकेंड होता है 0.001 2 3 4 जो ना तो खत्म हो, जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. अब रैशनल को आगे दो पार्ट में बांटते हैं, एक फ्रैक्शन, सॉरी रैशनल नंबर को आगे दो पार्ट में बांटते हैं. ये पहला आता है इंटीजर, ठीक है, फिर ये नीचे जाता है, ये आता है होल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर. तो ये डायग्राम से हम लोग समझ में आ सकता है, ठीक है. नाउ it's very necessary to introduce the number system before starting the real number. So here we are studying about the prime numbers and the composite numbers. Now you can see what is prime number. What is prime number? So what is prime number? A number is said to be prime number if it does not having factor other than 1 or itself. It does not have factor other than 1 or itself. For example, 2, 3, 5, 7. If we take an example of 2, then how many factors? 1 and 2. So itself, 1 or itself. If we take 7, so 1 or 7. So the number is said to be prime number having the factor only 1 or itself. That's all. So how many prime numbers lying between 1 to 100? So there are 25 prime numbers are such that belongs to 1 to 100 natural number. So right now, what is composite number? The number which is not prime is called composite number. Or in other words, what we can define, a number is said to be composite number if it has more factors other than 1 or itself. 1 or itself. तो बात करते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर जिसमें एक और खुद हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. जिसका फैक्टर वो एक हो या वो खुद हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स. यहाँ पे एक और वो खुद को छोड़ करके जो भी नंबर्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. तो जैसे एग्जांपल लिए 8 का, देन 8 का क्या, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 4 8. तो ऑलरेडी आई नो दैट कि 1 नहीं हो सकता, ना ही इटसेल्फ हो सकता है. तो 2 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, सो इट कैन नॉट बी. देन प्राइम नंबर which it will be, composite number will be 4. The smallest composite number is 4. And the remarks, 1 is neither prime number nor composite number. Thank you.